Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I'm really going to discuss for my GT students. GT students लेटर में क्यों डरते हैं भाई? इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि आप लोग लेटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. Just identify the letter, which category it is, and the most confusing category what you think is कि मैम ये फॉर्मल है. फॉर्मल तो चलो आपको मिल जाती है. ये सेमी है या ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल है. सेमी और इनफॉर्मल में बड़ा थिन लाइन मार्जिन है. एंड टू गेट अ गुड बैंड स्कोर काइंडली फॉलो दीज टिप्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू रीड द स्लाइड. मैं आपको स्लाइड पढ़ के ही समझा देती हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में यू हैव टू बी engaged in the introduction part of it. First category I'm going to discuss with you is a formal letter. Formal correspondence क्या होती है? Formal correspondence है जिसको हम जानते नहीं है और उसका हमारे साथ एक professional touch है. Now professional can be a government body, it can be any of the agencies, it can be any company जिसके साथ आप एक formal relation show करते हो, in which you are not very friendly. Easy words में कि वो आपकी दोस्ती नहीं है. You are not friendly with it. The only thing is you are just conveying your message. And this message can be in the form of any kind of a complaint, any kind of an information, or anything that you want to withdraw from the company. It can be to the airport authorities. It can be anything like that. Formal है भाई ये letter. And those words are going to be formal. Then the second part comes, that is informal letter. Informal is the letter in which you are friendly. It can be with your friends, with your cousins, with your neighbors, with anybody who is close to you. This letter comprises of the feelings, emotions, and in which you can ask a person, how are you? You get the liberty of it. Then after that comes semi. Semi means neither it's formal nor it's informal. It's in between. Now these are the categories of letters. You read these 4 slides very carefully, and to touch the good band score, vocabulary भी आपने वैसी ही यूज करनी है जिस कैटेगरी की लेटर आपके पास आई है. इससे examiner will be comfortable to understand that you are not misusing the words or you are unable to understand the letter. Misinterpretations मत करना. तो लेटर मुश्किल नहीं है. लेटर तो आप वैसे भी 10th से 12th से पढ़ते आए हो. आप थोड़ी सी भी कैटेगरीज ऑफ लेटर्स पढ़ लो तो खत्म हो जाएगा काम. इट इज जस्ट 150 वर्ड्स यू गॉट टू राइट. एंड फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन. Identify the category of the letter. Second is the explanation of the question. And third is the conclusion. I hope it's clear to you. Take care. God bless you.